What is formula for magnetic flux? Hello, formula for magnetic flux? Not remembering? Right. AB dA cos cos theta. theta. AB cos theta. Perfect. Magnetic flux phi B, we can say integral of B bar dot ds bar, which is A B cos theta, because it is dot product, not sine. So for n turns, flux will be NAB cos theta. Please write first part. Its SI unit is Weber. Its CGS unit is Maxwell. 1 Weber is 10 raised to 8 Maxwell. M suffix X. Maxwell. See, HSC student, I think they got the news. Exam will be in the month of April. Hello? HSC student, can you hear me? Yes, sir. Your exam will be in the month of April, na? Have you seen हाँ that? सर 15th के बाद. मतलब second week के बाद होगा ना? हाँ. So those who are trying purely on board, they can start any time for board preparation. But those who are trying for entrance and then board, मार्च 15 के पहले आप ज्यादा बोर्ड का मत पढ़ाई करो. मैं बीच बीच में एक एक चैप्टर का टेस्ट रखते जाऊंगा. अप्रैल से करना आप, मतलब मार्च 15 से यू स्टार्ट, वेयर आई विल कीप यू वीकली टेस्ट ऑफ प्रीलिम, दैट इज ऑल together. Before that, please practice maximum MCQ, so that when MCQ test is there, you are not worried when it will be kept. Because as such, admission will be on entrance mark, not on 12th standard. But 12th also minimum criteria, somewhere it is PCM 70%. Can I clear this first and second point? First and second point, can I clear? Okay. Magnetic flux is a scalar quantity or vector quantity? Magnetic flux is a scalar or vector? Scalar, sir. It is a scalar quantity. Do you know its dimension? Dimension of magnetic flux, are you knowing? दोनों आप निकाल सकते हो इसका डायमेंशन. अपना फॉर्मूला है NAB cos थीटा, बराबर. n का कोई डायमेंशन नहीं है, तो खाली AB का डायमेंशन आएगा. B मतलब फोर्स अपॉन IL लिखूं तो चलेगा ना, फ्रॉम मैग्नेटिज्म चैप्टर, मैग्नेटिक फील्ड वाला. Yes, sir. तो L raised to 2 M1 L1 T minus 2 upon A1 into L1. L1 cancel. So we get M1 L2 T minus 2 A minus 1. Write this. Right.
Yes, completed. All state board student, after the lecture, please wait for 2-3 minutes. If you complete, please tell fast. Okay. What is electromagnetic induction? Can anybody tell me what is electromagnetic induction? Ishika, can you tell what is electromagnetic induction? Sahil, can you tell what is electromagnetic induction? Anybody can say what is? Whenever there is change in magnetic flux associated with closed circuit, there is EMI induced and current flows EMI नहीं, through the EMF circuit. induced. EMI नहीं, EMI का तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ना, EMF is induced. बराबर है. Whenever there is change in magnetic flux, whenever there is change in magnetic flux associated with closed circuit, whenever there is EMF, then whenever there is change in magnetic flux associated with closed circuit, then EMF is induced in that circuit. This phenomenon is called as electromagnetic induction. This phenomenon is called as electromagnetic induction. The current flowing is called as induced current. एक बार लिख लो तो बाहर हो जाएगा. Aryan Singh, you gave the test? Yes, sir. You gave the test of magnetic field? No, sir. When you will give? Next year? No, sir. अभी हमारा उनके साथ चल रहा है सर, तो फिर मैं दे दूंगा. किसके साथ क्या चल रहा है आपका? सर वो 12th के साथ चल रहा है ना. अरे वो 12th के साथ आप क्यों चला रहे हो? आप 12th के साथ चलोगे, 12th वाला तो 12th देगा ना. आपका एंट्रेंस है मेन. 12th को तो 12th का थियरी चल रहा है. हाँ सर, तो पर उसमें थियरी हो जाएगा ना सर. तो इसमें तो आपको मैंने सिखाया ना एमसीक्यू. हाँ. तो फिर ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? आप देखो, आप लोग ऐसा मत सोचो मैं इसके साथ उसके साथ, क्योंकि आपको 12th का थोड़ा चाहिए था इसलिए मैंने बोल दिया. लेकिन आपको भी एंट्रेंस, वो लोग थोड़ी एंट्रेंस का देंगे एग्जाम. अगर वो 12th का बोर्ड का बैच है तो क्यों देंगे? बोलो, देंगे क्या वो लोग कभी? तो इससे क्या अपना काम चुरा रहे हो आप? और कुछ आपको प्रिपेयर करके 4 दिन के अंदर वो पेपर देना है. ठीक है सर. हाँ. और आपको पूरा संडे का टेस्ट एमसीक्यू टेस्ट देना है आपको. उनके साथ 12th का वो छोड़ दो, वो तो आपको इंफॉर्मेशन के लिए बिठा रहा हूं मैं. वो नहीं भी बैठोगे तो आपको चलेगा. आपको मेन एमसीक्यू टारगेट है. थियरी नहीं आता है तो आपको मुझे तुरंत पूछ लेना है. थियरी के लिए ज्यादा टाइम वेस्ट करोगे ना, फिर आपका एमसीक्यू रहेगा. Yes, sir. Yes, sir. ये बैच आपका बैच है. वो तो मैं आपको इमरजेंसी में बोलता हूँ कि अगर कुछ रह गया तो आप उसमें अटेंड करो. लेकिन आपका बैच यही बैच है जिसमें एमसीक्यू पूरा प्रिपेयर करना है. मैग्नेटिक इफेक्ट में हाईएस्ट एक स्टूडेंट को मिला है 172 आउट ऑफ 180 रिपीट बैच में. आप लोग का पेपर अभी चेक करना बाकी है. 172 मतलब जबरदस्त मार्क है ना.
तो कंपटीशन कैसे रहता है वो आपको समझेगा, ये मार्क बहुत ज्यादा होता है बहुत बच्चों को। कंप्लीटेड? आज टाइम यस यस। अब ये धीरे धीरे थियरी परफेक्ट करते जाओ, फिर कभी भी क्या होना चाहिए, एग्जाम का एक दिन पहले थियरी पढ़ा तो फुल मार्क मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। Faraday's laws of electromagnetic induction. How many laws are there for Faraday's law of electromagnetic induction? Two. What is Faraday's first law? वो अभी जो लिखा वही Faraday's first law था. Whenever there is change in magnetic flux associated with closed circuit, always EMF is induced in that circuit. This is known Faraday's first law. Okay. Will you write now? Write down along with me. Whenever there is change in magnetic flux associated with closed circuit, always EMF is induced in that circuit. This is called Faraday's first law. Then Faraday's second law. Completed? Can you state second law? The magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux associated with that circuit. Right. Second law, the magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux associated with that circuit. Completed? Yeah, shall I clear it off?
Yes, sir. So we can say therefore EMF is proportional to rate of change of flux. So E equals to N d phi by dt in magnitude. What is Lenz's law? The direction of induced EMF is such that it always opposes the cause producing it. Right, definition. The direction of induced EMF is such that it always opposes the cause producing it. Direction of induced EMF or induced current is such that it always opposes the cause producing it. Therefore, E equals to minus N d pi by dt. Negative sign indicates that induced EMF. Negative sign indicates that induced EMF always opposes change in magnetic flux. Always opposes change in magnetic flux. Done? Can I clear? Yes, over? Yes. Fleming's right hand rule. We know left hand rule. For induced current, we have to use right hand rule. Fleming's right hand rule. Imagine three fingers, that is index finger, comma middle finger, comma thumb of right hand to be outstretched mutually perpendicular to each other. Mutually perpendicular to each other. The index finger represents magnetic field. The index finger represents magnetic field. The middle finger represents induced current.
and thumb represents motion. Thumb represents direction of motion. Right now. In Fleming's left hand rule, index finger was magnetic field, middle finger was current, and thumb was force. Here, thumb represents direction of motion. Completed? Yes, written full? Yes, sir. When a conductor moves with velocity v or motional EMF due to translatory motion, comma, E equals to BLV, and motional EMF due to rotational motion. Motional EMF means conductor is moved, not the field is not changed. Motional EMF due to rotational motion, E equals to half BL square omega. Write these two formulas.
Completed? Yes, sir. But what you are wait to answer? If you complete, tell na first. I've sent few question set. Now we will revise that. Just see first question if you can see clearly. What is the direction of induced current in metal ring 1 and 2? First question. What is direction of induced current in metal ring 1 and 2 if current I is passed? When current I is increasing, I is increasing, we want direction of current in the metal 1 and 2. First you think yourself and tell me how you are thinking, then we'll discuss so that it will become easier for you. So first of all, you have to check what is direction of field associated with one when current I is passing. Can you tell me what will be direction of field here at top? Hello? What will be direction of field in coil 1 associated with coil 1? Outward or inward by right hand thumb rule? Sir, inward. Yes, inward. By right hand thumb rule, inward नहीं ऊपर outward हो जाएगा ना. देखो सॉरी सॉरी सर. हाँ हाँ सॉरी सॉरी. ऊपर outward होगा ना, तो ये ऊपर outward फील्ड आएगा. Outward. See, if I hold a pen in my hand, thumb to the right side, so I can see my palm is on lower side. तो lower वाला inward, फिर ये palm ऊपर लूंगा तो outward हो जाएगा. तो first वाले में outward, second वाले में inward. बराबर? हेलो? Yes, sir. So first वाले में outward but increasing because current is increasing. By Lenz's law, it should be decreased. Who is going to decrease? Inward wala na? That means current is in clockwise direction. Current will be in clockwise direction. And for second one, field is inward, again increasing. So we have to decrease. Inward will be decreased by outward. Outward means anti-clockwise direction. So this will behave like south pole. This will behave like north pole. Everybody has understood concept? हेलो? ठीक है, लिखो बराबर अच्छे से. This part is only difficult where you can't buy it. You have to understand, and at that moment you have to take decision. Yes, can we go to the second question now after the first one? Can we go to second one? Hello? Yes, sir. Second. A long straight current carrying wire.
A long straight current carrying wire passes normally through the center of circular loop. Long current carrying wire passes normally through the circular loop. If current through the wire is increasing, will there be induced EMF in the loop? Justify your answer. Will there be induced EMF in the loop or not? Hello? Current I is passing, this coil is perpendicular. We want, will there be induced EMF or not? नहीं रहेगा क्या? क्या चीज? जीरो रहेगा? हाँ, जीरो हो सकता है. आपको आंसर बताना है. क्यों? क्योंकि बोला जस्टिफाई. परपेंडिकुलर लेंजेस लॉ से परपेंडिकुलर जा रहे तो एरिया जीरो सर अपने कराया था. हाँ, मैंने बताया था. ये परफेक्ट बोल रहे हो आप. एरिया वेक्टर इज नॉर्मल ना ऐसा, हाँ और फील्ड भी डायरेक्शन में होगा ना इसका. हाँ बराबर. ये सर. हाँ तो देखो, ध्यान से देखो क्या है. इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है. एंड मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए बी कॉस थीटा. तो इसका एरिया वेक्टर एंड बी दोनों आपस में परपेंडिकुलर होएगा. यस. A is perpendicular to B, therefore change in flux will be zero, therefore induced EMF will be zero. Hello? यस सर. Others have followed. Why? This is current carrying conductor. वापस देखो, बहुत सही समय है. So what will be B? It will be I dl bar cross R bar. ये फॉर्मूला ना बायट सवर्ड से, बराबर. तो इसका अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा बिकॉज ऑफ दिस कंडक्टर, वो कौन सा डायरेक्शन में आएगा? ये कंडक्टर का डीएल मतलब आई का डायरेक्शन, दैट इज अलोंग एक्स आई कैप क्रॉस, एंड डिस्टेंस एट एनी पॉइंट अबव विल बी अलोंग वाई एक्सिस. तो इसका रिजल्ट क्या होएगा? जेड होएगा ना. आई एंड वाई का मतलब जे, आई जे का के हो जाता है, बराबर. So field will be perpendicular to this current. That means it is perpendicular to area vector. Hello? Hello? यस सर. To this area vector, field will be perpendicular. यस. So area vector is here and field is perpendicular. दोनों के बीच का angle 90. Therefore induced EMF 0. Everybody has followed, or you want more explanation? See, first this is the conductor. I want what is direction of field of this, because coil इसको perpendicular है. तो ये करंट इज इन डायरेक्शन लेफ्ट. तो बाय बायट सवर्ट्स लॉ डीएल बार क्रॉस आर बार का डायरेक्शन में बी बार होता है. आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. So this concept is cleared in your mind. Why field is perpendicular to area vector? Yes, sir. ठीक है. So EMF induced is 0. Third one, again beautiful sum. See, this part is only difficult because here direction you can't bahar, you can understand the concept of direction. So this is one conductor carrying current from downside, comes up, here come down, then it comes outward, up, high. Here there is a coil. Figure represents current carrying solenoid moving towards the loop. Find the direction of current induced in the loop. Here we want direction of current in the loop. This is also important one. First you all predict, then I will explain.
See, when you are seeing from here, this current is in going in clockwise or in anti-clockwise? ये नीचे से जा रहा है ना करंट, थोड़ा ध्यान दो बराबर। ये करंट एंटी क्लॉकवाइज है ना, ये वाला इसके अंदर सोलोनॉइड में। देखो सोलोनॉइड मतलब एक पेन अपना, करंट नीचे से जा रहा है, नीचे से, और फिर ऐसा ऊपर आ रहा है, तो कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है क्या क्लॉकवाइज? एंटी एंटी एंटी। एंटी मतलब ये पोल क्या बन जाएगा? नॉर्थ पोल बनेगा ना ये। तो नॉर्थ पोल जब भी नजदीक आता है, हेलो, यस सर। नॉर्थ पोल इज कमिंग क्लोजर, तो ये वाला इसको रिपेल करना चाहिए ना, ये कॉइल। यस यस। रिपेल करने के लिए कौन सा पोल इसके अंदर आना चाहिए? नॉर्थ नॉर्थ। पोल। नॉर्थ पोल मतलब करंट क्या हो जाएगा इसका? एंटी क्लॉकवाइज है ना। एंटी क्लॉकवाइज यस। फिर से एक बार वापस अच्छा समझ, डायरेक्शन वाला ही आपका मिस्टेक हो सकता है अगर एकदम पढ़ के गए तो भी। रेस्टॉल तो आपको यह बाहर रहेगा। फिर से देख लो एक बार। How many of you have followed that current is in anti-clockwise direction at this end here? Everybody has followed. देखो आप पेन अपने हाथ में रखो पहले, करंट वायर नीचे से गया तो मेरा हाथ भी डाउनवर्ड जाके ऐसा जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा ना आपको। So current is anti-clockwise. So this will behave like north pole. North pole is coming closer. So we have to repel it. तो north आना चाहिए। North मतलब current is in which direction? Anti-clockwise. Not followed. Yes, Manasvi, you have followed. Yes, sir. ठीक है। अगर ये करंट ऊपर से रहता तो मतलब ऐसा दिखाते तो ये साउथ पोल हो जाता ना। Then south pole is coming closer. Again you have to remember repel. ये south होएगा, current will be clockwise direction. As for that, it will change. Done third one? Yes, sir. Manashvi, are you comfortable now? क्या और भी आपके लिए सेपरेट लेक्चर लो? नहीं सर, कंफर्टेबल हो गए। The electric current flowing in a wire in the direction from B to A is decreasing. Current flowing from B to A is decreasing. It's decreasing. Find out the direction of induced current in the metallic loop kept near the wire as shown in the figure. Please try on your own. पहला फील्ड का डायरेक्शन निकालो। व्हाट विल बी द फील्ड का डायरेक्शन? ऊपर मुझे इनवर्ड दिख रहा है, आपको भी इनवर्ड दिखा? इधर फील्ड इनवर्ड आएगा ना राइट हैंड थंब रूल से, बराबर। थंब इज द राइट साइड, हाँ, और अपना पाम इनवर्ड जा रहा है ऊपर के साइड से। सो फील्ड इज इनवर्ड, decreasing because current is decreasing, so we have to increase it. Inward will be increased by inward. Inward means clockwise. हो गया, current will be in clockwise. This is the answer. एक बार समझ गया तो ऐसा एकदम मुंबई लैंग्वेज में हलवा लगेगा। Done. Fifth one. Two spherical bobs. Two spherical bobs. One made up of glass and one metallic and other glass. Okay. Metallic
and glass. Same size is allowed to fall freely from the same height. Which of the two will reach earlier and why? Who will reach earlier? Glass will reach earlier because it is an insulator, hence no EMF will be developed. No EMF due to Earth's field will develop. Whereas in case of metal, there will be Earth's field of acting on this, therefore it will oppose its motion. ये थोड़ा पीछे आए. Meaning समझ गया बे? Hello? 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 Yes, yes. अच्छा ठीक देख लो. Can I clear this? Next. A flexible wire of irregular shape ABCD is as shown. A wire ABCD is as shown. Turns into circular shape when placed in magnetic field which is directed normal to the plane of loop away from the reader. Away from the reader means going inward. Predict the direction of induced current in the wire. So there is one irregular wire placed in the field. It becomes circular, they are saying. If it is becoming circular means somebody is pulling from here. That they have shown also in the diagram. We are interested in what is direction of current. A, B, C, D is the field. What is direction of? Predict the direction of induced current in the wire. इसका एरिया ज्यादा होएगा कि कम होएगा? सर्कल हो गया तो एरिया ज्यादा होएगा कि कम होएगा? ज्यादा. ज्यादा ना? एरिया विल इंक्रीज. ठीक है, इसका मतलब फील्ड इनवर्ड विल इंक्रीज विद द कॉइल, है ना? थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लो बराबर. एरिया बढ़ रहा है तो इसके साथ फील्ड एसोसिएटेड इनवर्ड इन नेचर विल इंक्रीज. करेक्ट और नॉट? फर्स्ट. Yes. ओके, तो अपना लेंजेस लॉ क्या बोलता है? इट शुड बी अपोज्ड ना. सो इफ यू हैव इनवर्ड फील्ड इंक्रीजिंग विद द कॉइल, या Outward decreasing. pardon, सर तो outward decreasing आएगा. so it should be decreasing. That means you will get outward. Outward मतलब anti clockwise direction. This should be the direction of current, है ना? Any doubt? No sir. देखो एकदम सिंपल है, खाली आपको क्या सोचना है कि उल्ट ऑपोज करना है बस. Here it is field is constant, but because area changing, field associated with that area is increasing.
हाँ साहिल, you got disconnected, तो connected fast. कैसे हो आप सब यार, ऐसा मत करो यार. देखो अभी देखो, फिर ऐसा करोगे तो फिर मैं टेस्ट टेस्ट कर दूंगा ना. हाँ वो तो मैंने आपको एडमिट किया ना, तो मुझे समझा था भी आपने ज्वाइन किया. अभी फिर से आप डिस्कनेक्ट हो गए. ये टॉपिक बुक में नहीं मिलेगा आपको, ये तो डायरेक्शन बेस्ड कॉन्सेप्ट चल रहा है. अरे ऐसा मत करो. पाटिल किधर है, बाहर गया है क्या? उसका फोन लग बज रहा है, वो उठा नहीं रहा है. आप पहले ज्वाइन करो, उसको तो हम लोग बातें पूछेंगे. हाँ yes, 6th one over. Can we go to 7th now? Done, sir. अच्छा अच्छा. 7th one. In a given figure, a bar magnet is quickly moved towards conducting loop. A bar magnet with north pole facing the coil is quickly moved towards the coil. Conducting loop having capacitor, इसके अंदर एक capacitor A and B. Predict the polarity of plate A and B of the capacitor. अगर इधर करंट आया तो प्लस होगा और इधर आया तो बी पे प्लस होएगा. तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द नेचर ऑफ दिस फेस? कैन आई से नॉर्थ पोल? When north pole is brought closer to repel it, we should create north pole, correct? No? Hello? Hello? Yes, sir. Yes, sir. North pole means current is in which direction? Anti. तो ये पोलैरिटी आया, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो गया. Wherever current enters, that is positive. एक मिनट, थोड़ा सा एरर हो गया. इधर से देख रहे हैं हम लोग इसको, तो इसके सामने वाला फेस नॉर्थ है, जो पीछे से देखेंगे तो साउथ दिखेगा ना. देखो इधर नहीं, ये ऐसा है, तो हम लोग को ये साइड से देख रहे हैं ना हम लोग को, तो हमको ये क्लॉकवाइज दिखेगा ना. इधर इधर से जब देखेंगे तो ये वाला, ये रॉन्ग हो गया. करंट एंटी क्लॉकवाइज है इधर से, लेकिन जब इधर से देखोगे आप, लेफ्ट साइड से एंटी क्लॉकवाइज है, राइट साइड से तो क्लॉकवाइज हो गया ना. तो क्लॉकवाइज होगा तो करंट इधर, इधर प्लस और ये माइनस. ए इज पॉजिटिव, बी इज नेगेटिव. बिकॉज ये बीच में से नहीं देख सकते हम लोग को, तो इधर से देखना पड़ेगा ना. हेलो? Yes, sir. क्योंकि इधर देखो करंट ये ऐसे आगे आ रहा है, सो वी विल ऑब्जर्व फ्रॉम बिहाइंड, नॉट फ्रॉम इन फ्रंट. तो इसके अंदर का पूछा है, तो ये नॉर्थ, पीछे साइड से देखोगे तो साउथ रहेगा. देयरफॉर ए इज पॉजिटिव, बी इज नेगेटिव. अच्छा था. नेक्स्ट, state Lenz's law. We already did. One student can repeat what is Lenz's law. Sahil, can you repeat now? What is Lenz's law if you are there? Sahil, what is Lenz's law? Hello. What is Lenz's law? The direction of induced current or induced EMF is such that it always opposes the cause producing it. तो ये हो गया स्टेटमेंट.
They're telling a metal rod is held horizontally along east-west direction. A metal rod is held horizontally along east-west direction, is allowed to fall under gravity. Will there be induced EMF at its end? Justify your answer. Will there be induced EMF at its end? Justify your answer. Yes, say. When it is falling downward, then it will cut Earth's magnetic field, which is in north-south direction, है ना? Hello? Yes, sir. The Earth's magnetic field south-north को ये cut करेगा ना wire. So EMF Yes. will be induced by formula E equals to BLV. हो गया. Next one, check. On what factors does the magnitude of induced EMF in the circuit due to magnetic flux depends? On what factors the magnetic EMF depends? Area and magnetic field. नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स से डिपेंड ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड करता है ना. Yes, sir. Yes. उन्होंने बोला मैग्नेटिक फ्लक्स का किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. Okay. Then state Faraday's law of electromagnetic induction. I think you are remembering Faraday's law of electromagnetic induction. Yes, sir. First law, whenever there is rate of change of flux, whenever there is change in flux associated with circuit, EMF is induced. Second one, magnitude of induced EMF is directly proportional to rate of change of flux associated with that circuit. 11th wala. A closed loop PQRS is moved into a uniform magnetic field at right angles to the plane of paper. At right angle to the plane of paper as shown. Right angle to the plane of paper as shown. Predict the direction of induced current. P Q R S, field is inward और ये पेज को right angle बोला है, it is flowing. What will be the direction of induced EMF? लो, Sir, outward. अब ये तो ऐसे जा रहा है ना, तो कहना है इसे inward field will keep on increasing. So we have to decrease it. इसलिए मुझे चाहिए outward field. Outward मतलब anti-clockwise current हो गया. Current will be anti-clockwise because ये अंदर अगर जा रहा है तो inward वाला field will be increasing with the coil. Therefore we have to decrease it. To decrease inward we require outward field. Outward means anti-clockwise. Okay. Next one, check. Predict. This I'm leaving for you because already we have discussed such type. Current. Predict the direction of induced current in ring 1 and 2 when current is steadily decreasing. Increasing wala we did. Here they are telling decreasing. And direction is outward, right में, left में. ये है ना करंट का डायरेक्शन, आपको दिख रहा है बराबर? Left में. ये है ना, बराबर है ना फिर ये? तो लेफ्ट में है लेकिन नेचर क्या बोला है? डिक्रीजिंग है अभी. तो इसके अंदर और इसके अंदर का डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट चाहिए. ट्राई करो. पहले तो फील्ड क्या आएगा इधर? राइट हैंड थंब रूल से ऊपर वाले में इनवर्ड और नीचे वाले में आउटवर्ड. एम आई राइट? सो फॉर फर्स्ट कॉइल इनवर्ड, ये फील्ड डिक्रीजिंग है तो इनवर्ड डिक्रीजिंग आएगा. वी हैव टू इंक्रीज. आउटवर्ड मतलब एंटी क्लॉकवाइज. सेकेंड वाले का फील्ड आउटवर्ड
but decreasing. So we have to increase. To increase, we require outward only. Hello? Yes, sir, got it, sir. नहीं ऐसे मिस्टेक हो गया. Inward increasing, डिक्रीजिंग है ना, तो आप इंक्रीज करना है. इंक्रीज इनवर्ड को इनवर्ड करता है ना, इनवर्ड. तो ये क्लॉकवाइज है, ये आउटवर्ड डिक्रीजिंग. सो वी हैव टू इंक्रीज इट फॉर. नहीं नहीं नहीं, इनवर्ड नहीं, आउटवर्ड डिक्रीजिंग. बराबर. हाँ तो सर इंक्रीज कर आउटवर्ड को इंक्रीज आउटवर्ड ही करेगा ना, डिक्रीजिंग पहले है. लेकिन लेंजर्स लॉ क्या बोलता है, उल्टा करो, मतलब इंक्रीज, तो करंट एंटी आ जाएगा. ठीक है, एवरीबडी हैज फॉलोड टिल दिस. See, one more sheet, paper I have sent. Please try that till 20, so that if doubt is not there, I will tell the answer. If it is matching, we can move ahead. So again, Wednesday, same chapter we are going to proceed. EMI,